जी एक सेकंड वेट ड्रॉप यस यस आई एम रेडी होल्ड यस वन मोर सेफ्टी यस थैंक यू I'll come as long as he's there. Why? Yeah, We don't know we about don't this know much. much, no? I'm We there. don't know much. ओके ईशा जी क्या कहना चाहेंगे पेडल टेनिस जो एक नया स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस किया गया है बताएं इस स्पोर्ट्स के बारे में और कितना इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में स्पोर्ट्स हमारे यंगस्टर्स हैं देश में स्पोर्ट्स तो पहले से इम्पॉर्टेंट थे और आज भी इम्पॉर्टेंट है कंसिडरिंग दैट our generation or this generation is most of the time on gadgets. I think it's just becoming more and more important that we go a little outdoor and we increase our fitness levels. Well, paddle tennis के बारे में इतना ही कहना चाहूँगी कि ये टेनिस के समान ही है but of course it's a little different. बट ये अभी मैंने सुना है कि ये साल पहली बार ओलंपिक में भी खेला जा रहा है विच इज़ ग्रेट एंड मैं ज़रूर आई वुड लव टू ट्राई माई हैंड एट दिस स्पोर्ट क्योंकि मैं काफ़ी स्पोर्टी हूँ मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और कभी भी मैं कोई भी नया स्पोर्ट ट्राई करना मतलब पसंद करती हूँ मतलब इट्स लाइक अ चैलेंज इट्स आई लाइक इट्स फन सर अगर कुछ बताएं इस स्पोर्ट्स के बारे में हमारे ये दिस इज़ अ ब्लेंड ऑफ स्क्वॉश एंड टेनिस सो ये मेक्सिको में फाउंड किया गया था 1969 में और आज लगभग 65 कंट्रीज़ इसे खेलती हैं सो दिस इज़ ऑल्सो द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट रैकेट स्पोर्ट नहीं ये फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड है सो एंड पीपल आर अडॉप्टिंग इट एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो इन एंटायर यूरोप आफ्टर फुटबॉल इट इज़ द सेकेंड मोस्ट लव्ड गेम it's taken over basketball and lawn tennis, all of them. I've heard the courts have been converted now. Yeah, right? so one of the courts I went to, which is one of the biggest tennis academies in Barcelona, I found that 70% of the tennis courts have been converted into paddle courts. And we see a major shift from badminton, tennis to people playing paddle. Because it's fast and new generation wants a fast game, just like 2020. Initially it was not acceptable, but now people play and love it. So I think fast-paced lives are more acceptable to the younger generation. सर आप क्या कहना चाहेंगे इस स्पोर्ट्स ये सबसे बड़ी बात तो यही है कि आज गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है नए गेम्स नए स्पोर्ट्स को इवन द यंगर जनरेशन इज वेल राइट सो दिस बिकम्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट लाइक पीपल लाइक अस गिव हीट टू न्यू स्पोर्ट्स एंड द कंट्री प्लेज इट एंड व्हाट बेस्ट दैट द यंगर जनरेशन picks it up and then start becoming great sports person themselves as well. So yeah, it's a great initiative and I wish this will continue to grow in India as well. And we're extremely fortunate it's come to India and in Bombay. Absolutely. Extremely fortunate. Absolutely. And I would say that it is not only a big day for all of us, but it is a big day for the entire nation. And we are all a part of हो it. सकता है अगले ओलंपिक्स में हम खेल रहे हो हम खेल रहे हैं, you never know. मैं खेल रही हूँ. That's a possibility. जैसा आपने बताया कि फर्स्ट टाइम ओलंपिक में खेला जा रहा है उसके बारे में कितना एक्साइटेड है और कैसे ये तो यहाँ आके ही पता चला. तो पहली बात तो एक्साइटमेंट इस बात की थी कि जिस स्पोर्ट से हमारे हिसाब से जो इतना नया है ये ओलंपिक तक ऑलरेडी पहुँच गया है. दैट वाज अ ग्रेट थिंग फॉर अस यू नो. हम इस स्पोर्ट के बारे में अभी सुना है और ये ओलंपिक तक पहुँच भी गया है. सो आई रियली फील ऑनर्ड प्रिविलेज टू बी एसोसिएटेड विद अ game of this kind and the fact that it's been introduced in our country and our city, I think I find myself I think we're even more fortunate. Yeah, we're privileged to have people like you know Michael and others who have come to India और इसको grow करने की पूरी कोशिश हो रही है तरीके से. Thank you. Thank you. Thank you. क्या कहना चाहेंगे नया स्पोर्ट्स इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में मुंबई में स्पेशली क्या कहना चाहेंगे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे अभी इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है बट आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मुझे जो पता चला है इट्स आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन इन माई कॉलेज सो आई वुड लव टू लर्न इट एंड बाकी तो आप ही बता सकते हैं. यू कैन ओनली टेल अस कि क्या है क्या नहीं है. बट आई प्लेड लॉन टेनिस, आई प्लेड टेबल टेनिस बट नेवर पेडल टेनिस. सो
this is something which is very exciting, and it's exciting. It's something which is attracting me towards it. I would love to learn it from them. Can you tell us something about padel tennis? What is it all about? Yeah, it's about padel tennis. It's a very funny game. Nowadays, it's the second sport more practiced in Europe. And why is the second sport more important in Europe? Because one of the points is because the people who was playing is 50% women and 50% men. And what happened? You are playing always 2 versus 2, and you can play with your girlfriend, with your wife, you can do with your friends, and you can be 2 girls versus 2 boys, 3 girls versus 1 boy. It's a very funny game. And if you play one match, you learn very fast, so you can play the next match because it's very easy to learn, and it's very easy to improve your level. And depends of your health and depends of your qualities, you can improve faster or lower. But it's very easy to play. And It's very easy. funny. That's what I've heard कि 5 मिनट में सीख सकते हैं. तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अब सिखा दो, बट क्योंकि रेन्स हो रही हैं तो अभी सीख नहीं सकते. बट आई वुड लव टू एंड इट्स वेरी नाइस. इंडिया अब में आपका वेलकम है. वी वेलकम यू बिकॉज इंडिया में कोई ऐसा स्पोर्ट्स आए तो इट्स exciting, it's nice. Yeah, and one of the points of this game is because in 2022 in the World Cup of football in Qatar, they started with one friendly match of Padel. They will start the World Cup with one friendly match of Padel. In 2024 in the Olympic Games, we'll start with one friendly match of Padel, and 2028 it's the Olympic game. Oh, that's so nice. Yeah, and this is very nice for the country, and we will work for and make a good team to represent India in the Olympic Games 2028. That would be so nice. That's so nice. Thank you. Welcome. So, yeah, tell me something. एक्चुअली मैंने भी टेबल टेनिस ही खेला है, स्क्वॉश खेला है, लॉन टेनिस खेला है. बस इसके पैडल टेनिस के बारे में ही पहली बार सुना. तो बस आई होप कि ये गेम उतना ही अच्छा हो और खेलने में भी मज़ा आए. Also, आपको लगता है कि ये जो नया स्पोर्ट है वो स्कूलों में भी इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जैसे कि थोड़ी देर पहले मैंने सुना कि इसको ओलंपिक्स में भी इंट्रोड्यूस किया जाना है. ओके, नाइस. अभी से अगर स्कूल में इंट्रोड्यूस करेंगे तो हम भी स्पोर्ट्स को नहीं बिल्कुल, नए नए गेम्स ऐसे ही आजकल आगे बढ़ रहे हैं. मैं तो चाहूँगा कि स्कूल कॉलेज हर जगह ये गेम आगे बढ़े. मेरी विशेस हैं इस गेम के लिए. प्रोफेशनल फ्रंट में क्या हो रहा है आपका प्रोजेक्ट्स के बारे में? या आई एम वर्किंग ऑन समथिंग. या आई विल लेट यू नो सून. थैंक यू. Thank you. Sports is always sports, and we support all the sports, and I'm so happy कि आजकल फिट रहने की इतनी लाइन लगी हुई है. तो और एक स्पोर्ट्स इन्वेंट हुआ है मार्केट में और इंट्रोड्यूस हुआ है, विच इज़ रियली वेरी फैंटास्टिक, और वो हमें और फिट रखेगा. सो आई थिंक इट्स बेटर, इट्स अमेजिंग. अरे बहुत खेलते थे, इतना खेलते थे कि पूछो ही मत. मतलब खेलने के चक्कर में पढ़ाई भूल जाते थे, उतना खेलते थे. सो मेमोरीज़ के बारे में, हम दोनों सिस्टर्स हैं तो हमेशा ये जीत जाती थी और मैं नहीं जीतती थी, तो पकड़ के लाया जाता था घर पे. चलो नाउ इट्स योर स्टडी टाइम, Yes. स्टॉप दैट. बट मैं हमेशा स्पोर्ट्स के लिए फेल हुई हूँ स्टडीज़ में. उसके बारे में ये मैसेज देना चाहूँगी कि हमारी कंट्रीज़ जो है हमारी कंट्रीज़ ने सारे स्पोर्ट्स जो है वो अपनाए हैं. मुझे लगता है कि ये वाला भी सारे पसंद करें और खेलें, ताकि और फिट रह सके सब और उसमें और आगे जा सके. थैंक यू.
क्या हाल है जी? सबसे पहले बताइए कि पैडल टेनिस जो नया स्पोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ है उसके बारे में कुछ बताया और क्या इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है? मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। मेरे दोस्त हैं बकुल और मैं सेम बिल्डिंग में रहते हैं और रहते थे, अब तो ये शिफ्ट आउट हो गए। बट हाँ, मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं और इनका मुझे मैसेज आया पेडल टेनिस के बारे में, इन्होंने मुझे बताया और कुछ वीडियोस भी इन्होंने भेजे, तो वो देख करके मैं इतना एनामर हो गया एंड आई हैड टू कम हियर टू बी विद देम। स्पोर्ट्स की बात करें, कितना इंटरेस्ट मतलब है आपको स्पोर्ट्स में, और अगर कोई बचपन की मेमोरी शेयर करना चाहे स्पोर्ट्स में, कैसे थे आप? यार इस तरीके का स्पोर्ट तो हमने टेबल टेनिस ही खेला है या फिर टेबल टेनिस या लॉन टेनिस, tennis, स्क्वॉश, yeah. आई थिंक Squash, दीज आर yeah. ऑल द ब्लेंड ऑफ रैकेट स्पोर्ट्स। रैकेट स्पोर्ट्स है। तो ये सारे रैकेट स्पोर्ट्स का ब्लेंड है एंड इट इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। Wow. आज पूरी दुनिया में ये सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट है। What are you saying? Really? It's played in 65 countries and now in Olympics. So it's an Olympic sport now. So I think paddle is making its way on the top 3 maybe. And you'll be surprised to know Europe at one point of time used to play only football, basketball, lawn tennis. Now after football, paddle is the second loved game in the entire Europe. I don't know about this, but I do know that Bakul is a visionary, and whatever he puts his faith in, invests in, it's got to be game changing. So बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये it's right at the middle point between lawn tennis and squash and table tennis and all kind of games. I think it's a good outdoor sport and it's an easy sport to engage in. So definitely schools में introduce करना ही चाहिए और बहुत जल्द होगा भी मेरे ख्याल। There is something. Thank you. इन्होंने देखा नहीं मुझसे कर्ण। No, but thank you so much. But soon in a couple of days we'll talk. बहुत ज़्यादा है वो। आई थिंक एक बहुत सॉलिड एवेन्यू खुल गया है फॉर एक्टर्स, टेक्नीशियंस, फॉर इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन कैमरा, बिहाइंड द कैमरा, एंड फॉर गुड स्टोरीज. So we're all very, very happy that this OTT revolution has happened in our industry. So all the best. All the best, Bakul. Thank you. Thank you.